Welcome to all these special guests today for this YouTube live session featuring Brigadier Dr. Vinod Dutta, a renowned motivational speaker, trainer, and CEO of Career Navigator. Today, we will be diving into a crucial topic that affects all of us, and that is goal setting and career talent deployment. सो फ्रेंड्स, गोल सेटिंग जो है ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपकी लाइफ में गोल ना हो देन यू विल बी मूविंग हियर एंड देयर. इट विल बी लाइक कि आपके पास एक ऐसा घोड़ा है जो बिना डायरेक्शन के भाग रहा है, और जब तक उसको कोई डायरेक्शन ना मिले, कोई गोल ना मिले, तो वो रैंडम डायरेक्शंस में ही भागता रहेगा. यही चीज़ें हमारी लाइफ के साथ भी होती हैं कि जब तक हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं. कभी हम जॉब करते हैं, कभी जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करते हैं, फिर अपना काम छोड़कर कुछ और करते हैं. और स्टूडेंट्स के साथ भी यही होता है, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, किस लाइन में आगे जाऊँ, पता नहीं. इन्हीं सारी चीज़ों को कैसे हमें करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, किस तरह से गोल सेटिंग करनी चाहिए, उसके लिए आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद दत्ता. एंड क्योंकि गोल सेटिंग जो है आपके, इट्स ओनली द पार्ट ऑफ द इक्वेशन. टैलेंट डिप्लॉयमेंट, दैट इज द स्ट्रेटेजिक एलोकेशन ऑफ योर स्किल्स एंड एबिलिटीज. So, when we align our goals with our inherent talents, you know what? We actually unlock unparalleled productivity and fulfillment. So, sit back and absorb the wisdom and get ready to embark on a transformative journey towards achieving your goals and deploying your talents effectively. सो स्टेज हैंड ओवर करने से पहले मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद दत्ता के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा. डॉक्टर विनोद दत्ता जो हैं, ही इज़ एन accomplished business leader and facilitator with 15 years of training both in army as well as corporate world. He is a motivational speaker, a trainer of high repute, and his facilitation training programs, execute coaching sessions are widely appreciated for his high quality content coupled with a unique, thought provoking, stimulating, and entertaining style of delivery and an enduring commitment towards excellence. इनके जो प्रोग्राम हैं बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं. प्रूवन एबिलिटी इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड इम्पार्टिंग वेरियस ट्रेनिंग and facilitation programs like high impact presentation skills, team development programs, leadership communication, customer service, and team building, to name a few. He brings active learning, objectivity, and fun to the program. He actually has done sessions with Yatra, SBI, Railway, DHTI, PNB, Reliance, Capgemini, Skill Assure, and many more. And the list बहुत बड़ी है, कहाँ कहाँ तक आपको बताऊँ. He is also a guest faculty at the Army War College, Defense Service Staff College, Wellington, LBSNAA, Missouri, IIT, MIT University, ICSI, Delhi, IMA Delhi, Indian Railway, USI New Delhi, IIRD, Shimla, UIRD, Uttarakhand. थोड़ा इनका जो इंटरेस्ट है वो है, दैट इज ही इज अ कीन गोल्फर एंड वोरेशियस रीडर. He loves to travel and transit into new learning vistas. So, Brigadier Dr. Vinod Dutta was a senior advisor in banking, involved in strategy and key achievements. He has deep understanding of business process, stakeholders, and interdependencies. And presently, he is a CEO of the Career Navigators. So, बहुत कुछ है बात करने के लिए, ज़्यादा और भी बहुत कुछ जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. लेट्स कॉल डॉक्टर विनोद दत्ता ऑन द स्टेज. एंड इफ यू आर एक्साइटेड, जस्ट टाइप वेलकम ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद दत्ता. एंड सर, ओवर टू यू. Thank you, Prashant.
And it is always a pleasure because I have that singular honor to have shared dais or panel with Prashant at earlier instances also. और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम दोबारा कनेक्ट हुए हैं और जिस डायरेक्शन में प्रशांत ने अपनी जर्नी शुरू की है, क्योंकि देखिए अब you see we all are in the second innings of our life, at least people of my vintage. और हमारा एम ये रहता है कि सोसाइटी से जो आपने दिया है वो सोसाइटी को आप देते चले। और ख़ासकर देखिए जो कुछ चेंजेस देखे गए हैं, वैसे तो हर जनरेशन में ये सुनने को मिलता है कि साहब हमारे जनरेशन में ये होता था, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा डिसिप्लिन थे, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा डेडिकेटेड थे। बट मेरे जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से कॉन्ट्ररी है। आज की जो युवा पीढ़ी है, that is much intelligent, that is much resourceful, that has got much more reach than what we had. इनफैक्ट हम लोगों का जो जीवन रहा, दो गॉड हैज बीन काइंड, यू सी आई कम फ्रॉम अ फैमिली व्हिच वाज डूइंग वेल, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट most of people, they lived in an age of minimum existence. दो चार पेंटें होती थी, दो चार शूज हुआ करते थे, वो बड़े भाई के कपड़े छोटे हो जाते थे तो छोटे वाला पहन लेता था। आज के ज़माने में people don't believe in that. People believe in various luxuries of life. और जो एक पैराडाइम शिफ्ट जो देखने में आया है, and that is about how people have changed their thinking, how people have evolved a path for themselves. Now, one thing which I have learned is that जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो इंडिया के जो बच्चे हैं या जो इंडिया के मिडिल क्लास भी है, दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल। हमारे यहाँ शुरू से ये बताया जाता है कि हर चीज़ को आपने कैसे फॉलो करना है। और जो सबसे डायनेमिक चीज़ है हमारे अंदर, वो है हमारा माइंड। बिकॉज माइंड इज नथिंग, इट इज बेसिकली ए ट्रैफिक ऑफ थॉट्स। अगर आप देखें कि एवरी माइंड has so much of traffic which is there, still there are certain corners in your mind which are unswept corners where people have not ventured. So what is required is that this decluttering is very very important. जब हम आपकी एज में थे या जब हम यंग थे, we were suffering from information voids. हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताबें मुहैया नहीं थी, इंटरनेट तो था ही नहीं उस जमाने में, तो लोग नोट्स बनाया करते थे, लोग जो ज़्यादा विद्वान लोग होते थे उनसे मिला करते थे। आज की तारीख में एवरी चाइल्ड, एवरीबडी हैज़ गॉट एक्सेस, द इंफॉर्मेशन इज जस्ट ए क्लिक अवे. So that has really given rise to information overload. Now, people are not suffering from information void, they are suffering from information overload. और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, you see, वो थोड़ा सा it requires some tweaking, although the government has already rolled out the new education policy. क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 फेजेस से गुजरता है: लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग. Because whatever you are learning in school, it is basically to give you, a ticket to get a good seat in your college, to get a good job. Then you have to unlearn that, whatever you have learned in school and colleges. And then whatever field you join, you have to relearn their skills and their nuances or working ethos. And education system jo hai, it is basically churning out degrees. They are not focusing much on critical thinking. They are not focusing on emotional management. They are not focusing on emotional quotient. They are not focusing on social quotient. Like I have been in the selection procedure, selection centers of the army where army officers were being selected.
एंड यू विल बी सरप्राइज, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ जो सिलेक्शन होता है, एंड काफी लोग उससे गुजरे भी होंगे, कि हमारे यहाँ जो इंटरव्यू होता है वो 5 दिन का होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, जिसमें हम हर बच्चे की, वेदर ही इज अ बॉय और अ गर्ल, साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं, उसको ग्रुप एक्टिविटीज में टेस्ट करते हैं, और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करते हैं। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, मनसा वाचा कर्मणा, आपके मन में क्या है वो साइकोलॉजिस्ट चेक करता है, आपके एक्शंस क्या हैं वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट करता है, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर करता है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये किसी भी सर्विस में नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दैट आर्मी ऑफिसर्स आर द बेस्ट, और वो हरफन मौला होते हैं, एंड दे आर ए 360 डिग्री पर्सनालिटी। अब मैं आता हूं सब्जेक्ट प्रॉपर पे, कि जिसमें गोल सेटिंग। देखिए, हमारे यहां बचपन से और 55 तक यही सिखाया जाता है, हाउ टू अचीव गोल्स। You should achieve goals in time. You must meet timelines. You must have friendship with timelines. लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं सिखाया जाता है हाउ टू सेट गोल्स, जो बहुत लाजमी है और बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो चीज ये है, वो हमें स्कूल लेवल से ये सिखानी चाहिए, हाउ टू सेट गोल्स। बिकॉज अब गोल्स हैं क्या? गोल्स कुछ नहीं है, इट इज ए बेसिकली ए डेस्टिनेशन। क्योंकि देखिए, प्रशांत ने भी जिक्र किया, जब भी समय मिलता है मैं गोल्फ खेलता हूँ, और जब से मैंने फौज छोड़ी है उसके बाद तो गोल्फ वीकेंड्स पे ही पॉसिबल है, वरना फौज में तो अक्सर रोज आफ्टरनून में खेला करते थे। गोल्फ में जैसे ही आप टी ऑफ करते हैं, तो जब टी शॉट्स लेते हैं आप, तो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज लैंडिंग एरिया। बिकॉज वो आप शॉट लेते हैं, टी पे अपनी बॉल रखते हैं, यू टेक ए स्विंग एंड टेक द शॉट, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि हाँ मेरा ये शॉट अच्छा था, तो आई एम गोइंग टू लैंड at 200 yards or 180 yards or 220 yards. Similar is the condition for the goal setting. जब आप goal setting करते हैं, then you set a landing zone for yourself. That yes, I am going to land there, or I will be landing there. Now, what you see, I'm reminded of what Ratan Tata had said, that we are told how to achieve goals. We are an excellent follower, we are an excellent worker, we are an excellent kids, but we are not told how to set them, how to achieve them, what are the various steps which we must follow there. And what is important is that this learning should start from very early stages of life. It should not be relegated to later time frame. बिकॉज अक्सर क्या होता है, अगर आप किसी बच्चे को या किसी यंग प्रोफेशनल को, इफ यू डोंट इनिशिएट हिम इन द राइट अर्नेस्ट डायरेक्शन, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा जुगनू कल्चर होता है। जुगनू आपने देखा है ना, पीछे से लाइट चमकती है ऐसे। वो कहते हैं ना कि जुगनुओं की ये फितरत होती है, वो रोशनी दिखा के आपको अंधेरे में ले जाते हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट इफ यू डोंट हैव ए सिस्टमेटिक गोल सेटिंग study circles or workshops or learning centers, the people are going to learn by hit and trial method. That is totally unwarranted. So what is required is that we should have smaller goals. Like I was commanding a unit in the army. So my corps commander visited and he asked me, when I showed him the KRAs, the key result areas, उन बड़े फैशन में था, मैनेजमेंट जार्गन था। तो I told him, मैंने कहा sir, I want to achieve efficiency of 10% in my establishment, and it was a huge establishment having almost 5,000 people. And so I told him, he says, yeah, I'm afraid that you have set very low KRAs. So I told him, I said, sir, by the time I finish or my presentation unfolds, उसके बाद आपको पता लगेगा कि yes, these are realistic KRAs which I fixed, or the objectives which I fixed. And sure enough, by the time, you see, after an hour or so where I finished my presentation, the corps commander said, yeah, I'm very happy, and today even I'm going at least wiser, that the objectives or the goals should be fixed which are achievable.
So we must fix goals which are achievable, and they should be set in such a manner that you achieve them in an incremental way. So you have to keep your goals and tasks small. And everything in life, let me tell you, is refreshing your choices. Or if you want to make bigger choices, you have to have different choices. If you want to be a run of mill प्रोडक्ट, तो फिर आप वही बीटन ट्रैक पे चलते रहेंगे. जैसे आपने तांगे पहले चला करते थे, आपने देखा होगा तांगे में जो घोड़ा होता था वो रेलवे स्टेशन से शहर की तरफ जाता था, शहर से वापस आता था, और केवल एक थोड़ा सा इशारा करता था तांगे वाला, एंड द हॉर्स विल गो एंड स्टॉप देयर. So if you want to follow that, then I am afraid you are not a leader, or you don't know how to carve out a path or a goal for yourself. Now you have to be very deliberate in deciding your goals. Avoid distractions. Avoid templating people. You see, what we do is, okay, Raman is doing this, Mohini is doing this, so I should also do it. And this practice comes from helicopter parenting. बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है, पेरेंट्स जनरली ये एंश्योर करते हैं, एंड आई एम श्योर दे आर डूइंग इन द राइट स्पिरिट, कि जो अचीव वो खुद नहीं कर पाए हैं, वो दे वांट देयर चिल्ड्रन टू अचीव दैट, सो दे सेट गोल्स फॉर देम. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट दे होवर अराउंड लाइक अ हेलीकॉप्टर ऑन देम, एंड द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड is hampered. I'll give you an example of my own son. You see, he got a medical seat, and after 3 months he said, I want to leave. And in fact, he didn't tell me directly because he was scared, so he conveyed it to my wife, and then I was conveyed after 3 months. So initially I also felt bad, and I told him that why you want to leave. He says, it doesn't interest me, and I want to pursue what interests me. So I said, there's no point pressurizing this child. So I told him, okay, you withdraw yourself. And then he joined Delhi University. The onus was on him. And I told him, I can give you, the best of place to live, the best of, financial help. And the child, let me tell you, that he did very well. And he topped Delhi University, and he went on to do his research work from King's College London, and he came out with flying colors. So the pressure was on the child. When I say pressure, means the positive pressure that I have to perform well. So we have to give that kind of leverage to kids. Now you have to understand your personality. You see, no two kids are of the same caliber. So what you have to do is that you have to understand that you have to carry out that SWOT analysis. What are your strengths? What are your weaknesses? What are the opportunities you have? And what are the threats? Because you are staying in a VUCA world. Now you have to stand up and confirm your belief system, or convey your belief system to the people who matter. Like what, my son did. He conveyed in no uncertain terms that I don't want to do it. And today, he's teaching in IIT. He has taught in King's College also. He has taught in IIM also. So what I want to tell you is that a person has to have a courage of conviction so that he can achieve his goals which have been set by him. Now, what I want to tell you is that there are certain barriers in goal setting also. Because life is not bed of roses. Everything is not hunky-dory. Because if there are no ups and downs, if the line is straight, in the ECG parlance, they say game is over. So what are the various barriers which are there? People start getting afraid of failures. Let me also tell you, failure is not opposite to success. It is a complement to success. Because once you fail, and I'm sure every person has seen failure. So it is a reinforced attempt which you are making to achieve that success. And
the motivation which you get after a failure is much better, and the results are, phenomenal. Look at your past, but don't carry that baggage. गुलजार ने कहा था कि गुलजार साहब ने कहा है कि मैं ही सोचता था मैं ही रईस हूं गमों के मामले में, बट लोगों से मिला तो हर इंसान शहंशाह निकला. So everybody has got problems. Everybody has got challenges. The moment you reel back or you come out, you spiral out of that cocoon, that is going to be achievable for you, and that is going to be a success stepping stone for you. Now, you don't have to underestimate your talent. Generally, what happens is that we try to underestimate. हम ये सोचते हैं यार अनिल कर लेगा, सुनील कर लेगा. I can't do it. आपने देखा होगा शास्त्रों में भी कहा गया है, इवन हनुमान जी, जो इतनी एक विशाल शक्ति हैं, उनको खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं. जब एक ऋषि ने उन्हें बताया कि आपके अंदर ये इतनी शक्तियां हैं, सो दैट टैलेंट मैपिंग हैज टू बी डन. वो कहते हैं ना, हम लोग कई बार निराश हो जाते हैं. हम ये सोचते हैं कि यार मुझे सक्सेस नहीं मिली, मुझे क्या होगा. You see, there was a girl in my institute. I'm the CEO of the Career Navigators. She was very hardworking. She did extremely well. Somehow in the interview stage, she could not come in the merit, and she said, "Sir, क्या achieve हुआ मुझे?" I could understand her desperation, but I told her, I said, no effort is going to go waste. No effort is going to go waste. Just carry on and don't lose heart. तभी कहते हैं ना कि होके मायूस न उखाड़ो पौधों को, होके मायूस न उखाड़ो पौधों को, जहां धूप हुई है वहां बारिश भी होगी. So have patience, be calm, cool and collected. Because आप ये देखिए, it is good to be ambitious, but it is bad to be over ambitious. Every single problem has got a unique solution. And what you have to do is have patience and things will fall in the right slot. Now we talk about certain things, that individual glory, individual achievements. Yes, definitely, they have their own place. But all these things is transient. Whatever organization you join, किसी भी इदारे में आप ज्वाइन करते हैं, किसी महकमे में जाते हैं, तो आपको ये देखा जाता है कि आप एक यूजफुल मेंबर ऑफ टीम बनते हैं कि नहीं. और उसके लिए ये जरूरी है कि आपके अंदर वो टीम स्पिरिट होनी चाहिए. इसीलिए आपने देखा होगा, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इज द इंडियन आर्मी, बिकॉज इट इज ए मिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. It is an organization where there is no runners-up prize. You can't say there was a war between two countries and we stood second. No. So what we have to focus is that the goal should be so made that you achieve your mission. You deliver. Come what may. And that time frame, that slot, and that potential you have to fathom. Another thing which you have to do is, which should be done, is decision making. Now, decision making is very, very important as far as goal setting is concerned. A study was done of Fortune 500 CEOs, and decision देखिए 3 प्रकार के होते हैं. टेक्निकल डिसीजन, और ये टर्मिनोलॉजी भी आर्मी से ही ली गई है. जितनी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो डिफेंस से ली गई हैं, चाहे ऑपरेशनल रिसर्च हो, मटेरियल्स मैनेजमेंट हो, या और कोई हो. तो डिसीजन मेकिंग की टेक्निकल लेवल decision making, operational level decision making, and strategic level decision making. Technical level होती है routine, day to day. Operational is middle management, and strategic is apex. So what was found is that say about 60% of CEOs could not take a very balanced tactical decisions. That's why we have a bottoms up approach. Our leadership grows from foundation to the firmness. And it was decided that we do not encourage the youngsters
or we don't factor them into decision making. I am a very, very profound supporter of family democracy. Include in your family the children in decision making. They may not take decisions, they may not influence your decisions, but at least they will learn how to take decisions and how to help in taking decisions once they grow up. Now, if you see, एक चीज मैंने देखी गई है, प्रोक्रास्टिनेशन डिसीजन मेकिंग से ही आजकल की जनरेशन में देखा रहे यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो पड़े हैं बरसों. That thing you have to take out from your personality, because what happens is the moment you relegate things, the moment you postpone, the moment you defer things, you will never find a right opportunity. So you have to do things at the right time, in the right framework of mind, and to achieve the right results. Now, discipline becomes a backbone in your goal setting and decision making. And discipline is like, देखिए जो धनुष होता है ना, वो धनुष की तरह होता है जिसपे वो डोरी चढ़ी होती है, जिसे हिंदी में प्रत्यंचा कहते हैं. और जब तक वो चढ़ी रहती है तब तक वो एक हथियार है, और उसके बाद it becomes a डंडा, और it is like a stick. So वो जब तक डोरी आपके ऊपर चढ़ी रहेगी डिसिप्लिन की, and discipline is not rocket science. These are the best practices which a mother tells her daughter, which a father tells his son, which a teacher tells the taught. So what is required is that the best practices have to be followed, and that is discipline. Discipline is not when somebody is seeing you, then only you follow the rules and regulations. Discipline is when nobody is seeing you, still you are following the rules and procedures. So that is called discipline. Now, risk-taking ability is also very, very important as far as goal setting is concerned. If you don't take risk, the calculated risk I'm taking, you will not achieve anything. There is a difference between risky stimulus and taking risk. Now, you must have seen, in those James Headley Chase novels and all, don't get involved in any kind of risky stimulus. वही जुगनू वाली बात है. Don't go into those gray zones. Don't go into those dark areas. You must have seen, we have had a case where, Shah Rukh Khan's son was involved in, that drug case. And you can imagine, the poor guy had just gone to attend a party, and he got into such a thick soup that a person of stature of Shah Rukh Khan could not get him a bail for so many days. So please understand that whatever you want to do, take a decision, deliberate decision, and draw a line this far, no further. Now, social media is another, social media is like a dream merchant. They are giving a walkover in your sleep. आजकल लोगों में ये बड़ी धारणा आ गई है कि साहब, वो पहले कई बार होते थे जब कोई आपको आशीर्वाद देता था तो लोग कहते थे यार, पुत्रवती भव, या पुत्री का जन्म हो. आजकल तो लोग कहते हैं साहब, बेटा हो न हो, डेटा जरूर होना चाहिए. So that is the kind of dependence we have on internet, and of course it is required because it is the order of the day. But what we must do is we must have a discipline or a apportionment of time for everything. हमारे शास्त्रों में कहा गया है सम यम नियम फूल फल ज्ञाना. Some means the appropriate time. Wait for everything. Unfortunately, the kids want to tread into such risky stimulus at a very early stage. हर चीज का समय होता है. Yam, control. Have that control. Have niyam, discipline. Then only you will flower. Once you follow this, then you will flower, and then you will fructify. उस पे फिर फल लगेगा, and then you will get ज्ञान. तो शास्त्रों में कहा गया है सम यम नियम फूल फल ज्ञान.
So we must teach our youngsters, young professionals, that we must follow this. और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप किसी चीज से डरते रहोगे, वो चीज आपको हॉन्ट करती रहेगी. इसीलिए जब तक आप अपने फैसले लोगे, गुड, बैड और indifferent. I'll tell you, I was in Kargil war. We were to go for an attack. And by 8:30, we started in the night and we were getting no success. So at 2:30, one officer comes back crawling to me and he says, "Sir, we are left with just 2 hours of darkness and the enemy is just 400-500 meters away. And we are not likely to get any reinforcement. हमको रसद आने वाली नहीं है because यहाँ कोई पेड़ वेड़ तो है नहीं." So I asked him, "What is your recommendation?" He says, "Sir, suicidal attack. अब तो मरना तो है ही, अब जितनों को मार लो उतना ही फायदा रहेगा." Now decision making मैं बता रहा हूँ. I took say about 2 minutes. I had two options, either to ring up my base and ask for reinforcement, जो नहीं आने वाला था, or else lie dogo there and get butchered in the morning. So I said, okay, लड़कों को इकट्ठा करो and let's assault with whatever ammunition, because ammunition was also low. Another a सिपाही in my unit, he comes and says, he says, साहब, जो हमारा, क्योंकि जब कोई पलटन अटैक के लिए जाती है तो अपना एक वॉर क्राई होता है जोश दिलाने के लिए लोगों को, और हमने कहा, कहता साहब हम अपना वॉर क्राई नहीं बोलेंगे, हम जो पाकिस्तान की पलटन है हम उसका वॉर क्राई बोलेंगे. तो मैंने कहा, यार क्या बात बोल रहे हो यार. कहते नहीं सर, आपको देखना इसका फायदा मिलेगा. आई सेड नहीं यार, अपनी यूनिट है, अपनी पलटन है, उसका हम. कहते नहीं. और हम लोग इकट्ठे हुए और जोर से हमने चिल्लाया, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर. पाकिस्तान ने भी अपनी रीइंफोर्समेंट मंगाई हुई थी. उन्होंने सोचा उनकी रीइंफोर्समेंट आ गई, उन्होंने फायरिंग बंद कर दी, हमारे लिए गाइड भेज दिए. हमने गाइड्स को पकड़ा, उनको मारा और उनके जो बंकर थे उनको कैप्चर किया, और सुबह 8 साढ़े 8 तक हमको वो पोस्ट हमारे कब्जे में थी. तो कहने का मतलब यह है कि डिसीजन मेकिंग इज सो इंपॉर्टेंट. वो 2 मिनट अगर मैं ये सोचता रहता तो शायद आज मैं आपसे मुखातिब नहीं हो रहा होता. ये जो फोटो मेरी लगी है पीछे, इस पे माला चढ़ी होती. तीसरी चीज मैं बताता हूं कि टैलेंट. देखिए, शास्त्रों का जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूं, उसमें एक चीज बड़ी कही है कि ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसमें कोई शक्ति ना हो, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई खूबी ना हो, और ऐसी कोई बूटी नहीं जिसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो. सो टैलेंट मैपिंग एंड टैलेंट डिप्लॉयमेंट आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो whom should be, whom to deploy where. So that is very very important. And now I want to tell you that talent harnessing is something like McKinsey study which has been done, which says that you have to empower yourself. You have to change with the changed circumstances. I remember when I, because when I was in the army, तो बड़े लाम लश्कर होते हैं साहब, किसी को बता दिया, प्रेजेंटेशन बन गया 2 मिनट में. I was to go and give a talk in IIT Kanpur, and I was to make a presentation. I just left army, and you will be surprised to know that I didn't know how to make a PPT presentation. So I told my son, I said, "Yaar, can you make a PPT presentation for me?" He said, "Yeah, I'll do it," because जिस तरह के बच्चे होते हैं, because आजकल they work in the night and sleep in the day. And I was getting restless. I said, "यार वो आया नहीं presentation." And whatever presentation he made it as per his style, and it was not to my desired. And that day I decided that I will learn PPT. And at that point of time, now I make good presentations, and I have learned. So everything is a learnable skill. बशीर पत्र ने बड़ा अच्छा कहा है कि कोई चांद लाकर नहीं देगा, कोई चांद लाकर नहीं देगा, अपने चेहरे को जगमगाया कर. Today I am not dependent on anybody for that presentation, and I realize that for learning there is no, like I did my PhD at the age of 45, and when my viva was going on, they asked me, they asked me certain questions. I told him, I said, this subject, I am dealing with it. I have learned this subject.
So I could, contest my, guide and the people who were taking Viva because I was thorough in my subject. So that thoroughness has to be there. Then second is change of, attitude. Attitude is like an iceberg. आपको एक इतना सा टिप दिखाई देता है, बाकी सब आपके अंदर समाया हुआ है. And attitude is one thing which can take you to places. Attitude is like a burst tire of your scooty or your car. If you don't change it, you are not moving ahead. So you have to follow all those things which are there. You have to follow that, yes, you have to change your attitude. You have to be firm and flexible. आपने देखा होगा जब साइक्लोन वगैरह कुछ आता है, आंधी आती है, तो जो लचीले पेड़ होते हैं वो थपेड़े तो झेलते हैं, लेकिन सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक खड़े रहते हैं. जो रिजिड होते हैं पेड़, वो जमींदोश होते हैं और उन पे सुबह आरी चल रही होती है, दैट यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यू आर ब्लॉकिंग द वे. So please understand, have those flexibility in your personality. क्योंकि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां हर चीज के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन किया गया है. चाहे आप वेद देखें, चाहे पुराण देखें, चाहे उपनिषद देखें, चाहे ब्राह्मणास देखें, हर चीज में किसी न किसी की उसमें जिक्र किया गया है. नाउ तीसरी चीज ये है, हमें whenever we are talking of talent deployment, we should also focus on teaching people, the youngsters, about emotional management, about anger management, about jealousy management. They are part of your life. Stress management. So unless you have these stages which are addressed at the right time, your talent will not be utilized to the maximum, or it will not be giving you the optimum results what you are desiring. So goal setting, talent mapping, and talent deployment, decision making are all interrelated. So what we have to do is that you have to set smaller and achievable goals. Like, what you do when you order a pizza. When the pizza comes, it is not that you start gulping it down. You enjoy that pizza. Your aim or your goal is to enjoy that pizza, but you eat it piece by piece. So not only you relish it, but you enjoy it also. And dream big, start small, and act now. That's what I brought out, the procrastination. If you delay setting goals, more delay results in delayed achievements. And keep targets and goals achievable. As I have already told you, set bar at an achievable height. By no stretch of imagination, I'm telling you to keep your standards low. No. And what you have to do is that whenever, like, you are playing golf, or you must have seen cricket, एक sweet spot होता है बैट पे या गोल्फ के क्लब पे. तो जब वो बॉल को हिट करता है, आपने भी देखा होगा जब कोई किसी ने 6 लगाया या 4 लगाया है क्रिकेट में, यू कैन मेक आउट द साउंड जो आती है. सो प्लीज वेट फॉर दैट स्वीट स्पॉट, एंड द मोमेंट यू गेट दैट स्वीट स्पॉट, you will achieve your goal. You will achieve your landing zone where you have started, or you have at least ventured. Now with this, I think points, I will conclude my talk, because if you believe on luck, luck means, or lucky people are those who get opportunity. Brilliance means the people who create opportunity, and winner is the one who uses the opportunity. So set goals, achievable, and look for those opportunities. Carry out SWOT analysis of yourself. I think not taking this too much of time of yours, I'm open to questions. If you have any questions, or if you wanted to ask through Prashant, or anybody who wants to contribute anything, you're most welcome. Wonderful job. So I hope I'm audible. Yeah. Okay, that's amazing. I'm sure
जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे. So friends, you can ask your questions as we are live, and you can ask your doubts. If you have any clarity or anything you required, don't think that it can be a silly question, but do ask. It can benefit other people also. अगर आपके माइंड में वो क्वेश्चन आ रहा है तो वो दूसरे लोगों के माइंड में भी आ सकता है, राइट? सो आई हैव सम क्वेश्चंस हियर टिल नाउ, सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो सर ने बताया है कि गोल्स हमारे कैसे सेट होने चाहिए, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद देम, बट आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाई गोल्स आर इम्पोर्टेंट इन पर्सनल लाइफ टू. बिल्कुल, देखिए प्रशांत, अच्छा सवाल है. बिकॉज देखिए, इफ यू डोंट हैव गोल्स, अगर गोल्स नहीं होंगे तो जिंदगी गोल हो जाएगी. So because then you'll be running in circles. So whatever, the definition of goal is, it is the desired destination which you have set and the time and resources which you require to accomplish them. So unless you decide कि मुझे करना क्या है, वो कहते हैं ना, गालिब ताउम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. तो हम लोग कई बार गलत डायरेक्शन में दौड़े चले जाते हैं. तो जो एफर्ट लगाना है वो हमें राइट डायरेक्शन में लगाना चाहिए एंड इन द राइट क्वांटिटी. सो इफ यू डोंट हैव गोल्स, देन यू विल बी रडरलेस. Wonderful answer. So the next question is, how can I differentiate between short-term and long-term goals? Yeah, that's a very good question. In fact, you should have short-term goals and long-term goals. Short-term goals are in your formative years, when you are building your career, when you are completing your education. So they are like, okay, I want to do this. I want to have so much of percentage of marks, or I want to appear in this competitive exam, or I want to do this, or I will clear these departmental exams. Mm-hmm. And long-term goals are that you decide that, yes, where I have to settle down, how my kids' education will be taken care of, how will I look after my post-retirement this thing. So those are goals which require a longer horizon or a higher horizon. So you must keep them for the later part of your career, because the formative years are where you should have short-term goals. Right. Okay, so we have a question here. What role does clarity play in goal setting? Bilkul, clarity is very, very important. Because if you are nebulous in your thinking, अगर आपको यही पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, so once you have clarity, the decision may be good, bad, indifferent. But if you are clear that, yes, this is what I want to achieve. Like I gave you the example of my son. He was clear that, yes, I don't want to do medical. So that clarity is there. So clarity has to be there. You have to decide, and that decision making will tell you. Yeah. Okay, so just to add on, see if अगर clarity आपको नहीं होगी तो again you will be moving here and there. आपको पता ही नहीं होगा कि आपका गोल क्या है, कहाँ पर आपको जाना है. एंड इट विल बी लाइक कि आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचने और आप बोलते हैं कि मेरे को टिकट दे दो, बट मुझे कहाँ जाना है ये भी क्लियर नहीं है. सो आई एम श्योर आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. सो दैट इज क्लैरिटी. So wonderful answer. Thank you so much for that. There is another question. कि realistic goals को without limiting my potential मैं कैसे set करूँ? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, what you have to do is you have to carry out your SWOT analysis. You have to firstly map your talent. कि मेरी के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या मैं कर सकता हूँ. Ask your friends, ask your parents, ask your teachers, ask your immediate boss, and then take a holistic view of yours. Right. वो कहते हैं ना कि बदलना तो चाहता हूं मैं निज़ाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं. तो आप देखिए, आपको वही करना है जो आप अचीव कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, learn about your strengths, learn about your weaknesses,
learn about your opportunities which you have and the threats which are there in the environment. तो वो आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे, then you will know कि हाँ ये मेरी weakness है, ये मेरी strength. जैसा कि सर ने बीच में बताया था अभी SWOT एनालिसिस, सो अपने लिए अगर वो करें तो आई थिंक दे विल बी अ बेनिफिट, राइट? Okay, so next question is how can I be motivated and focused on my goals, especially when I'm going through some challenges? You see, I told you challenges are part of life. You see, because if there are no challenges, आपने देखा होगा, in our brain, since Prashant is a authority on psychology, there is something called Area 47 in this thing in our brain. What happens is the moment that Area 47 gives instructions to your mind that आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो बंदा गाड़ी चला रहा होता है उसकी नींद नहीं आती है, जो बाकी बंदे होते हैं वो थोड़ी देर बाद बीन बजाना शुरू कर देते हैं. तो वो इसलिए है बिकॉज दैट ड्राइवर नोज कि यार देयर आर चैलेंजेस ऑन माय वे. द मोमेंट यू नो दैट इफ आई एम गिविंग यू अ टॉक and if you know yaar he is going to talk the same rubbish things or the same thing, then you'll say yaar you'll switch off, aap so jaoge. But the moment I make it interesting, creative, or something like aap suspense wali movie mein web series kyun nahi chhodte ho? Because they are interesting, they are gripping. Wonderful. So yeah, so you have to make your life interesting. वो कहते हैं ना कि बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अमेजिंग. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर प्लीज बताएं कि क्या कुछ ऐसी कोई टेक्निक है टू ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू मैनेजेबल टास्क्स, क्योंकि बिग गोल देखकर तो पसीने आ जाते हैं. Yes, no, that's a very good question. You see, that's why I'm telling you, start with baby steps. वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था मंजिले जाने, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया. तो आप ये देखिए, सो केवल छोटे-छोटे गोल्स रखिए. Wonderful. And एक क्वेश्चन है, what is the connection between goal setting and self-esteem? Yeah, self-esteem is very important. You see, self-esteem is required because it will give you a positive thinking. It will give you a morale boosting, that dopamine जो release होता है, that chemical which is released. So that gives you that, a force to work. So that is very, very important. Wonderful. Okay, the next question is, what are the common misconceptions usually people have about their talents? About their talents, yeah. Log, you see, the fear of failure, the fear factor. Log क्या कहेंगे? Right. And let me tell you one thing, कोई कुछ नहीं कहता. ये कहते हैं ना सबसे बड़ा वहम क्या कहेंगे, लोग कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता. People will only talk good about you, the day a person dies. अरे साहब बड़ा अच्छे थे, बड़े पॉजिटिव थे, बड़ा किसी का हर एक का भला करते थे. वो बंदा जब मर गया उसको भी लगता है यार बेकारी मर गए, तो दे आर ऑल टॉकिंग सो नाइस अबाउट यू, लेट्स गेट अप. सो डोंट वरी अबाउट पीपल, डोंट वरी अबाउट पीपल. वो कहते हैं ना कि जिंदगी में मैं बहुत परेशान रहा हूं, पर खुशी इस बात की है कि अपने आसपास रहा हूं. सो बी अराउंड योरसेल्फ. And the moment, success has so many fathers. The moment you get success, everybody will say, "Arey yaar." Right. Okay. So the next question is, can you hear me? Okay. I think the screen is freezing in between. Okay, what strategies would you suggest for individuals कि कई बार जो हमारा conflicts बीच में आ जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करें? Yeah, that's again a good question. You see, conflict management, because conflicts can be internal, external, or intrinsic. So that is very, very important, because and conflict resolution is also
it is within you only. Whether you want to resolve it, or whether you want to drag it, or whether you want to live with it. So it is always better to resolve the issues, to take a step back also sometimes, because आपने देखा होगा शेर जब लंबी छलांग मारता है तो पहले कुछ कदम पीछे जाता है. So sometimes you can have a tactical retreat to achieve your goals. Okay. वंडरफुल. पर अगेन कोई ऐसी टेक्निक जो इनको हेल्प कर सके कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करें? या यू सी, फर्स्ट इज, देखिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के 3-4 टेक्निक्स हैं. फर्स्ट इज यू सी रेजोल्यूशन मेथड. यू रिजॉल्व इट by walk the talk. You go and talk to the person. Second is collaborative, that okay sir, okay you do this, I'll do this for you. Third is compromise, that okay theek hai, I also compromise to a certain degree and you also compromise without lowering your self esteem, the point which somebody had raised earlier. So all these factors, you can choose any of the factors which is suitable to you. Wonderful. Awesome. The next question is, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने गोल के नजदीक पहुंच रहा हूं? कोई ऐसा एविडेंस? Yeah. You see, you have to have mid-course reviews. You have various templates where you say, okay, I have achieved this much. Now, this is the time frame which is there. So either I have to increase the resources, or I have to augment the resources, and so that I achieve whatever I have fixed in this timelines. So those mid-course reviews are a must, and that you should always, don't wait for the last कि अच्छा मैं लास्ट में आई विल टेक ए रिव्यू, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो. या एग्जैक्टली. ओके, डू यू थिंक दैट जो हमारे गोल्स हैं उनको शेप करने में, लाइक टू शेपिंग आवर गोल्स, पर्सनल वैल्यूज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल? इफ यस देन हाउ? इफ नो देन हाउ? Personal values are very, very important, you see, for your personal as well as professional growth. Because you see, if you don't have substance in you, आपने देखा होगा जैसे चावल की बोरी आती है या गेहूं की जो बोरी आती है, वो तब तक खड़ी रहती है जब तक उसके अंदर कोई प्रोडक्ट होता है या सब्सटेंस होता है. सो सिमिलरली हमारी पर्सनालिटी है, जब तक उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड. और जैसे ही वो खाली हो जाती है, पीपल यूज इट एज ए डोर मैट, या उसको बेच देते हैं कबाड़ी वाले को. Wonderful. So Wonderful. you have to have that kind of substance in your personality, personal values. So I'm sure that you got the answer. Till the time you don't have personal values, you won't be able to shape your goals. So again, कुछ ना कुछ आपके अंदर होना चाहिए, and that way you'll be able to shape your goals in an effective manner. Okay, there's another question. How can I prioritize my multiple goals? क्योंकि हर किसी की लाइफ में कई सारे गोल्स होते हैं, बट हाउ कैन आई prioritize? क्योंकि कई बार मेरा टाइम भी उसके अकॉर्डिंग स्विच होता रहता है. कभी वो गोल माइंड में आता है तो मैं उधर भागता हूँ, फिर वो गोल माइंड में आता है तो मैं उधर भागता हूँ, एंड एज ए रिजल्ट मैं कहीं पर भी नहीं पहुँचता. Yeah, that shows that you see you have not selected, और जो आपके पास विकल्प हैं उनका आपने सही एनालिसिस नहीं किया है, और डिसीजन मेकिंग उसमें आपको हेल्प करती है. डिसीजन क्या है, कई जो विकल्प हैं उनमें से राइट डिसीजन चुनना, राइट विकल्प को चुनना. सो दैट यू हैव टू से दैट यस आई विल यूज दिस. अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी यूथ की प्रॉब्लम ये है, उसने देखा है कोई लड़का आईआईटी कर रहा है तो वो आईआईटी करने चला जाता है, कोई कॉर्पोरेट में जा रहा है वो वहां चला जाता है, देन ही सेज यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या मुफीद है, आपके लिए क्या, और आपके टैलेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं. राइट, कि आपका टेस्ट क्या है. हर किसी का टेस्ट अलग होता है, तो उनके अकॉर्डिंग अपना टेस्ट चेंज करना इज नॉट लाइक आपका निश नहीं है वो. आप किसी और के निश को अपना निश बनाओ तो अगेन एक टाइम के बाद आप थक जाओगे, या फिर आपके माइंड में आएगा कि ओके आई थिंक दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी. वंडरफुल. Awesome. So the next question is, so sir, आपके according to your experience,
What are the common challenges an individual faces when setting career-related goals? Yeah. First is, you see, the competition. Now what happens is, इंडिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे यहाँ भी ऐड 2 करोड़ पीपल एवरी ईयर, एंड उसमें से 1 करोड़ 20 लाख लोग हर साल जॉब में खड़े हो जाते हैं. आपने देखा होगा 2020 में नीट का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें 275% ओवर एंड अबव रजिस्ट्रेशन हुआ. So every year things are snowballing into challenges. So what you have to do is you have to decide कि मुझे कब से वो तैयारी शुरू करनी है. If you are thinking that जब से ये मैगी आई है तब से लोगों के our society has become instant, our goals have become instant. हमें हर चीज इंस्टेंटली चाहिए. पहले केवल कॉफी इंस्टेंट हुआ करती थी, तो अब हम हर चीज चाहते हैं, लेकिन हम ये बैकवर्ड कैलकुलेट नहीं करते कि मुझे, अब जैसे आपने रेलवे स्टेशन जाना है, इफ यू हैव टू गो टू यू सी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन फ्रॉम साकेत, so you have to work your calculate the time and distance in terms of time in Delhi, not in terms of distance कि यार वो तो 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर I'll clock in so much of time. No. So all those factors you have to keep it in mind. What are the challenges? What are the roadblocks which I'll have? What are the other external factors which will come in way? And then those cushion periods you have to keep it, and then you will be able to achieve it. Awesome. Wonderful. I'm actually enjoying it. So that's wonderful. And okay, the next question, okay, I've got here in the chat box. Are there specific techniques or exercises that can boost motivation? Yeah, motivation is firstly, you see, have confidence in yourself, and always reward yourself. You see, because आज की ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है. So reward yourself. You should always pat yourself. Yes, I have done this thing good. मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कोई और कहता है ना, कोई चांद लाकर नहीं देगा, अपने चेहरे को जगमगाया कर. Have good friends. Have good people, who will motivate you. Have people who give positive vibes. So all Good those community. factors, they, because we all are energy beings. The moment you have, feel good factor, your energy increases. The moment you are down in dumps, your energy is sapped. Okay. So the next question is, do you think that affirmations or meditation play an important role in goal setting or talent deployment? Yes, yes. Why not? Because you see, if you are focused, if you are doing something, concentration is very, very important. And मैं हर इंसान को यही बोलता हूँ कि 24 घंटे में से 2 घंटे आप, 1 घंटा देश के लिए और 1 घंटा देह के लिए. When I say they means body. Keep yourself fit. I'm not saying that you have to join some gym and pay $10,000 there. No. जो चीज आप पैदल कर सकते हैं. You see, I was working in a corporate. I used to always use though I had an attached washroom in my office, but I used to always go on the 3rd floor. तो एक तो मेरी walk हो जाती थी, and at least I could see people working there. So you have to have device. And second is 1 hour you must devote for the nation building. When I say nation building, ये नहीं कि राइफल उठा के सीधे गलवान पहुंच जाओ. No. What you have to do is, like, even you can help a senior citizen, you can help some poor people, you can teach some underprivileged children. कहीं कोई गार्बेज पड़ा है, कहीं स्ट्रीट लाइट ही बंद कर दिया आपने, that is also nation building. कहीं कोई नल लीक कर रहा है, वहां टैप लगा दिया या उसको बंद कर दिया, वो भी नेशन बिल्डिंग. Wonderful, wonderful, wonderful. That's great. I have 2 more questions. The first one is, how can parents and educators nurture goal setting skills in children and teenagers? How can they? You see, I'll tell Because you. वही हमारी लाइफ में सबसे पहले होते हैं, जो हमारे सबसे करीब होते हैं. या देखिए, एक चाइल्ड का जो सबसे बेहतरीन पीरियड होता है ग्रोथ का, उसकी जो वो होता है, वो 6 साल में होता है, पहले 6 साल में. एंड दैट कम्स फ्रॉम द फैमिली, दैट इज फ्रॉम, एंड मोस्टली फ्रॉम द मदर.
एंड देन इज द टीचर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा समय आप इनके साथ व्यतीत करते हैं। तो आपको इस तरह के मोटिवेटिंग फैक्टर्स बताने पड़े होंगे। आपने देखा होगा बाबा फरीद इतने बड़े पैगंबर हुए, और वो जब नमाज पढ़ते थे तो वो पूछते थे अपनी माँ से मुझे क्या फायदा होगा इसका पढ़ने का। तो उनकी मदर एक स्वीट रख देती थी जब वो नमाज पढ़ते थे, बोले तू अगर नमाज पढ़ेगा तो देखो तेरे को खुदा तुमको ये मिठाई देगा। एंड वो मिलता था मिठाई। बाद में खैर वो खुद इतने बड़े पैगंबर बने। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे मोटिवेशनल एक्सचेंजेस यू शुड हैव। यू शुड पैट पीपल, यू शुड एनकरेज पीपल। लाइक अंग्रेज कहते थे प्रेजेस आर वेजेस, सो प्रेज पीपल। And that's why you not only, when you praise, you not only keep yourself happy, you also keep the other party happy. You are also encouraging that person to do better, to do much. Okay. Amazing one. The last question is any final tip you want to give to the people who are watching us right now and who will be watching us later? I just want to tell you that never give up. You see, keep working hard, because Yeah. ups and downs are part of life. So never give up and keep yourself, कहते हैं ना, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे. Wonderful, wonderful, amazing one. So, thank you so much, and friends, as this insightful session on goal setting and talent deployment with Brigadier Dr. Vinod Dutta, CEO of Career Navigator, it comes to an end. We, or, we both want to express our heartfelt gratitude to all of you uh, for your active participation and your thoughtful questions, people who participated. And again, my heartfelt thanks to Brigadier Dr. Vinay Dutta for accepting the proposal and to come in the show. Your wisdom, your expertise have actually illuminated the understanding of goal setting and talent deployment. Your valuable insights have undoubtedly inspired everyone present here, and I'm sure जो लोग हमें बाद में देखेंगे उनको भी कहीं ना कहीं they will get illuminated, they will be motivated somewhere or the other way. एंड फ्रेंड्स, अगर आप ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद दत्ता जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं टू एक्सप्लोर मोर अबाउट गोल सेटिंग, बिकॉज गोल सेटिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं पर एक ऐसे गाइड की ज़रूरत बिल्कुल होगी जहाँ पर आपको ये पता चले कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं, जो गोल आप सेट कर रहे हैं, कि वो वाकई आपके लिए है या नहीं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गोल सेट करते रहेंगे और इधर उधर चलते रहेंगे, आप ये तो कहेंगे कि मेरी लाइफ में गोल तो है, बट अगेन वो अचीव नहीं होता। आप थोड़ा दूर जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर दूसरा रास्ता चेंज कर लेते हैं, कोई तीसरा रास्ता चेंज कर लेते हैं, और इसी तरह से आप अपने गोल को ढूंढते ही रहते हैं। सो आपके लिए क्या गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आपको जाना चाहिए, आई एम श्योर दैट ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद दत्ता इनसे बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज इनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जो अभी तक इन्होंने सीखा है, जितने वर्षों तक इनका जो अध्ययन रहा है, आपको सारा नॉलेज आपके उन कुछ सेशंस में आपको मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजंस इन लाइफ, यू विल बी एबल टू रीच टू योर गोल. सो इफ़ यू वांट टू रीच टू हिम, व्हाट आई विल डू, मैं इनकी डिटेल्स जो हैं जैसे ही सेशन ओवर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड यू कैन कनेक्ट विद हिम एंड गेट एम्पावर्ड, get enlightenment, get growth, set your goals, and reach to your outcome. Once again, thank you so much, my wonderful audience, for being a part of this enriching session. And आई होप द नॉलेज जो आज हमने यहाँ पर शेयर किया है, ये कहीं ना कहीं पर आपको गाइडिंग लाइट तो देगा ही आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में, और आपको एम्पावर करेगा दूसरे लोगों को भी सिखाने के लिए. So remember, your goals are achievable and your talents are superpowers. Wishing you all great success and fulfillment in all your endeavors. And once again, thank you so much, Dr. Vinod Dutta, Brigadier Dr. Vinod Dutta, to be in the session, to enlightening all of us. Thank you so much. Thank you. Jai Hind. So, Jai Hind, Jai Bharat, and friends, stay connected.
stay motivated, stay focused, and see you once again next week with a new topic and a new speaker. Till then, stay healthy, take care, bye bye, namaste.